Yes, so we were Okay, sir. discussing printers last time, and I was telling you that they can print dots per inch. It is called the ability to print dots is called the resolution. So they can print 300 dpi in 1 inch, and more higher resolution is 600 dpi, and 1200 is very high definition, and it is used in fine arts. And next is, the output devices. We have already studied the monitors, but I want to tell you about the ports. So monitors can connect to this kind of port. You can see here. It is called the display port. Monitor connects to this display port, and we also have, multimedia projectors that we use in the class. They can connect to this HDMI port, and TV sets are also use this HDMI port. So high definition multimedia interface port you use to connect displays like monitors, TV sets, and any other display, video display device. And other computer ports, you will find is USB. Yeah, this one is USB drive, and this port is USB port. These are the USB ports at the rear panel, rear side of the CPU. You will find these ports. Laptop में होंदा है, sides में होंदा है, laptop में ही ports होंदा है. So you have these USB ports. He display port है. This is HDMI port. So these two ports are used to connect monitors. These are general purpose ports. You can use to connect mouse, keyboard, or any other device. Video game controllers, many things. And other port is Ethernet port. Where's Ethernet port? This one is Ethernet port. ये जेको आहे Ethernet port है. Screen हाणे ॾिसो screen. पर ही USB जो ॿियूं बि सूरतूं आहिनि न, ॿियूं बि टाइप्स आहिनि. USB जूं ॿियूं बि टाइप्स आहिनि. तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं इहे. कीबोर्ड में कॾहिं कॾहिं प्रिंटर में मुख़्तलिफ़ थोरियूं यूज़ थींदियूं आहिनि USB cables. Like USB serial bus standard means, it sends data serially. It sends data serially. Serially mana, I tell you the difference between serial communication and parallel communication. I draw two things here. So these are 8 lines. These are 8 conductors. These are 8 conductors. 8 conductors. Okay, so they can send electrical signal, all of them. So 8 conductors. So you can transmit and receive 8 bits simultaneously. You can receive and transmit. So data can go from computer to the printer in form of 8 bits. So 1 byte in 1 cycle. So I can write here 8 bits in 1 clock cycle. Take. So this is faster communication. It uses parallel conductors, 8 parallel conductors. But serial communication में छा थींदो? Serial communication में सिर्फ 1 conductor will be used. There is only 1 conductor. So 1 bit is sent in 1 cycle. 1 bit is sent in 1 cycle. अच्छा, 1 bit per cycle जेको आहे transmit थींदो आहे, 1 bit per clock cycle. That this communication is slower as compared to parallel communication, but parallel communication uses 8 conductors. This is simpler. This uses only 1 conductor. त हिन में छा थींदो आहे? If you want to send data, parallel conductor में 1001001, for example, this is the 8-bit data. This is the 8-bit data that you want to send. त छा थींदो? See, 1 is transmitted here. 1 किथे transmit थींदो? मथे. Next conductor te. Next conductor will transmit 0. So every conductor is sending 1 bit data.
this conductor will send 0 and this conductor will send 1. This conductor will send 0 and he conductor छा send कंदो 1. This conductor will send 0 and he conductor 1 send कंदो त ईअं 8 bit data transmit थींदी ठीक त सभई bits हिक ई cycle में हलिया वेंदा all the 8 bits ऐं हिते छा थींदो if you want to send the same data here in serial communication त छा थींदो पहिरीं 1 वेंदो पहिरीं ही 1 वेंदो next छा थींदो next this 0 will be transmitted इन जे पुठियां ही वेंदो 0 will be transmitted इन 0 खां पुठियां छा थींदो so these bits will be transmitted one by one सही है so it will take 8 cycles to transmit 8 bits so it will take 8 cycles to transmit 8 bits one by one वेंदा all the bits will go one by one समझ में अची वियो USB serial communication है HDMI and display port they are parallel communication Ethernet is I think serial communication it's serial so communication can be parallel can be serial सही है any questions no Sir, parallel conductor, 8 conductors will be used in it. So 8-bit data transfer one time, and serial communication in which only one conductor will be used. So 8-bit data will transfer one by one 8 times. सही Am I ॻाल्हि right आहे or not? बिल्कुलु बिल्कुलु Yes, हाणे sir. ही ॾिसो न ही आहे रोड आहे जी सर हाँ इहो वन वे रोड आहे पर इन में मल्टी लेन्स आहिनि 4 लेन्स आहिनि त 4 गाॾियूं हिक ई वक़्तु हलंदियूं न गॾ में पर जेकॾहिं पाण हीअं करियूं फॉर एग्जाम्पल पाण वटि पैसा कोन्हनि थोरा पैसा आहिनि पाण वॾो रोड नथा ठाहे सघूं त पाण सोड़ो रोड ठाहींदासीं हीअं त छा थींदो एक वक्त में एक गाड़ी जाएगी ठीकु आहे न त सिर्फ़ु हिकिड़े वक़्त में हिकिड़ी गाॾी वेंदी न ऐं ॿी गाॾी वरी उन जे पुठियां वेंदी जी सर ठीक है ना ॿी गाड़ी वरी उन जे पुठियां वेंदी थर्ड will go follow the second fourth will follow the third and this parallel road is faster because 4 cars can go parallelly yes sir ठीक the parallel communication is faster as compared to serial communication पर USB तव्हां यूज़ कंदा आहियो या serial communication आहे ऐं Ethernet is also serial ठीक है but these two are parallel communications okay so these ports you will find in the these ports you will find on the rear panel of the system unit this box is system unit and rear side is shown here ठीक है ना इनमें सब ports ताकि नजर ईंदा this for example this one ही छा ही power cord जे लाइ है this one is for the power cord you know it already huh yes sir it is generic you will find it in many electrical appliances electrical आहे connector ठीक है so this one is sound card अच्छा ही sound card है हाणे अॼुकल्ह छा हूंदो आहे mostly sound card is built in the motherboard but you know mostly in the older system units you needed to separately attach the sound card so sound card is separate circuit altogether in which you could insert speakers and microphones the speaker and microphone connect thínda so that the computer can receive the audio file and can play the audio file so computer can play audio file and receive audio file through sound card and your sound card kithe kiye lagaibo hai sound card I will show you in the classroom next time but you can see oh he hai na he motherboard hai motherboard mein he white color mein expansion slots hain na yes sir इहो साउंड कार्ड हिन में इंसर्ट थी वेंदो आहे साउंड कार्ड ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो गेम कंट्रोलर्स you know these kind of things you can add extra hardware
into your computer using expansion slots. Using expansion slots, what you can do? We can add extra hardwares. Yeah, using expansion slots, one can add extra hardware to add more functionality to the computer. For example, if you add sound card, if you add sound card, It will improve the quality. Yes, sound quality. it will enable computer to record and play sound oblique audio files. So yeah, record and play the sound files, because you will be able to add a speaker using sound card. Sound card के ते तव्हां छा कनेक्ट करे सघो था? Speakers. Speakers. You can connect speakers to the sound card, and you can also connect microphone. You can also connect Microphone. हाणे माइक्रोफोन तव्हांखे ख़बर आहे छा कंदो आहे? माइक्रोफोन साउंड सिग्नल खे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कंदो आहे. माइक्रोफोन छा कंदो आहे? साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. Converts sound to electrical signal, and then next what you do, you give the signal to the sound card. Electrical connect kanda ayo electrically to the sound card. He slots, he pins so pya he ports, audio ports, and speaker छा कंदो आहे? Converts electrical signal into sound. Converts electrical signal into sound. He very receive kando hai from sound card. The speaker receives the electrical signal from sound card, and microphone sends the electrical signal to the sound card. And this one is modem. Modem is obsolete. We do not use today. Modem age hundi hui. You used to connect. Actually, I tell you, telephone line है न, लाइन जंहिंमें टेलीफोन कनेक्ट थींदो आहे, उहा साॻी लाइन जेका आहे जंहिंमें टेलीफोन कनेक्ट थींदो आहे, उहा साॻी लाइन पाण टेलीफोन वारी हिन में लॻाईंदा आहियूं. ओ हिन पोर्ट में, ओ हिते, सही आहे, हिते पाण टेलीफोन लाइन लॻाईंदा आहियूं हिन पोर्ट में. सो वी यूज टू सेंड डिजिटल डेटा छा थ्रू टेलीफोन लाइन, थ्रू टेलीफोन लाइन. त मॉडेम अॻे लॻंदी हुई कंप्यूटर में, मॉडेम जो कार्ड इंसर्ट कबो हो, so that you can connect telephone line to the computer, and then this modem, this is called modem, ठीक? This modem used to send and receive signals, digital signals through telephone line, and it is obsolete now. We do not use it anymore. Slow internet hundo ho. Today we use broadband, and we don't use this modem. Sir, what we use nowadays, can you please repeat? I mean, see, mostly computers have built in into this kind of circuitry is built in into the motherboards. For example, Ethernet hai, you will find Ethernet port. He जेका modem ताने घर में पई हूंदी न? No, sir. ताने घर में जेका modem पई हूंदी, nowadays this one, ही ताने घर में पई हूंदी. Yes, sir. Now he antenna Yes, है, sir. Yes, sir. एंटीना है. एंटीना जो मतलब छा थियो त वायरलेस कम्युनिकेशन है न. तव्हांजे लैपटॉप में ऐं तव्हांजे मोबाइल फोन में वाईफाई है. जी सर. इट इज वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक? त एंटीना ही जेका एंटीना ट्रांसमिट एंड रिसीव करे पई डेटा फ्रॉम योर मोबाइल फोन. यू कनेक्ट योर टेलीफोन लाइन हियर. तव्हांजी टेलीफोन लाइन हिन में लॻी वेंदी आहे. नाउ यू कैन आल्सो कनेक्ट योर कंप्यूटर थ्रू वायर. हिते तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो इथरनेट. तव्हांजे घर में जेका मॉडेम पई आहे न, तव्हांजे घर में मॉडेम पई आहे, या इन में इथरनेट पोर्ट आहे. यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर यूज़िंग इथरनेट केबल आल्सो. Yes, sir. वायर सां बि कनेक्ट करे सघो था, ऐं पंहिंजे कंप्यूटर खे वायरलेस सां बि कनेक्ट करे सघो था. समटाइम्स योर CPU does not have Wi-Fi capability. ठीकु आहे, त पोइ तव्हां वायर सां कनेक्ट करे सघो था, या तव्हां ही बि वठी सघो था.
ही ॾिठो आहे न वाईफाई डोंगल की ही ॾिठी आहे Yes, sir. तव्हांजे कंप्यूटर में वाईफाई कैपेबिलिटी न हूंदी आहे समटाइम्स हूंदी आहे बिल्ट इन इफ इट इज नॉट बिल्ट इन त पोइ तव्हां छा कंदा आहियो यू कैन बाय डोंगल की एंड कनेक्ट टू योर सीपीयू हाणे सीपीयू सां ही कीअं कनेक्ट थींदो यूज़िंग यूएसबी यूज़िंग Through यूएसबी sir. पोर्ट यूएसबी पोर्ट में लॻी वेंदो ऐं ही तव्हां एंटीना आहे हिनखे इट विल रिसीव वाईफाई सिग्नल्स एंड योर कंप्यूटर also has this Ethernet port. So you can also connect your computer with using Ethernet port. So mostly many things are now part of the motherboard. You don't need to put extra, hardware in expansion slots. अॻे छा हूंदो त असीं एक्सपेंशन स्लॉट्स में इलाही शयूं विझंदा हुआसीं छाकाणि त हू मदरबोर्ड जो हिसो न हूंदियूं हुयूं उहे शयूं अॼुकल्ह जेको आहे इहो स्टैंडर्ड आहे माना मोस्टली थिंग्स आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड you do not use expansion slots ठीक है because see using internet was rare पहिरीं एतिरो common कोन हूंदो not everybody was using internet the internet was not common the people used to buy modem and insert in their CPU अच्छा network card है ये network card वरी ईअं आहे त can use this to connect one computer with the other computer nowadays it is obsolete because all the computers have necessarily network card part of as part of their motherboard तव्हां separate network card वठी कोन लॻाईंदा आहियो न it is necessary part today ठीक है because in old days computer to computer communication was not very common people did not used to do so now it is very common and see storage media I have already told you like there are optical media there are magnetic media there are electronic media this CD is optical medium and these are electronic memories you can see and electronic memories and magnetic disk hard disk or optical disk and they are called physical storage physical storage त physical storage जेको आहे physical storage में ही media use थींदा आहिनि optical magnetic electronic now logical storage छा हूंदो आहे because when you want to store data onto your disk any disk optical disk or magnetic disk what you do you make partitions partition C partition D partition E ईअं हूंदो आहे न Yes, sir. and partition C is usually called a system partition partition C छा हूंदो आहे System partition. माना इने में छा System थींदो आहे part. you Sir, put operating system Windows. operating system install कंदा आहियो तव्हां पंहिंजो for example you may be installing Windows त इन में operating system install थींदो आहे and ॿियो छा थींदो आहे तव्हां पंहिंजो सॼो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कंदा आहियो एप्लीकेशंस C में D में and E में you store your files अच्छा पोइ हर पार्टीशन जे अंदरि तव्हां फोल्डर्स ठाहींदा आहियो folders can be for example you can make a folder ITC जे नाले सां तव्हां फोल्डर ठाहे सघो था to store your files related to the ITC course या तव्हां ही ठाहे सघो था हिकिड़ो ॿियो फोल्डर family pictures where you store the pictures and in each folder you can place several files कहिड़ा files हूंदा आहिनि text files हूंदा आहिनि document files like word documents excel files हूंदा आहिनि माना spreadsheets सही आहे ऐं videos हूंदियूं आहिनि video files हूंदा आहिनि images हूंदा आहिनि इहे सभु file types आहिनि drawing files हूंदा आहिनि presentation files हूंदा आहिनि PowerPoint presentation files ऐं image जा file कहिड़ा हूंदा आहिनि JPG हूंदो आहे GIF हूंदो आहे PDF हूंदो आहे सर ठीकु आहे न PNG फाइल फॉर्मेट हूंदो आहे त डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हूंदा आहिनि त मुख़्तलिफ़ फाइल नेम्स हूंदा आहिनि तव्हां पंहिंजो फाइल नेम ॾींदा आहियो फाइल नेम कैन बी एनीथिंग लाइक फाइल नेम कहिड़ो थी सघे थो असाइनमेंट 1 ही फाइल नेम थी सघे थो असाइनमेंट 1 डॉट डॉक्स हुयो ही फाइल नेम थी सघे थो न फॉर एग्जांपल यस सर ठीकु आहे त फाइल नेम्स हूंदा आहिनि त डेटा पाण कीअं स्टोर कंदा आहियूं पहिरीं डिस्क जा पार्टीशन्स ठाहींदा आहियूं ऐं हर पार्टीशन में पोइ मुख़्तलिफ़ फोल्डर्स ठाहींदा आहियूं ऐं हर फोल्डर में वरी अलॻि सां फाइल्स रखंदा आहियूं
केतिरा पार्टीशन आहिनि हिन में? 2 पार्टीशन आहिनि. पार्टीशन C, ही पार्टीशन C आहे हिन पासे ऐं ही पार्टीशन D आहे. So 2 brothers may be sharing one almirah, one cupboard, and then within each partition there are folders. You can think of this way. Yes, sir. हिन में folders आहिनि, ही folders आहिनि ऐं हर folder में मुख़्तलिफ़ files पे आहिनि. You can think of this way. Folder 1, folder 2, then folder 3 in this partition, something like this, and inside this folder there are multiple files. You can think of this way. So it is called logical storage, means how you manage your physical storage. So logical storage is the way you manage your physical storage. So logical storage, it is the way you manage your physical storage. No? Yes, sir.